Hello, good morning. How are you all? All are fine. Yes, all ready for our English class? Yes? Okay. Today we are going to do the fourth chapter, that is in-house garden. Right? What is the name of the chapter? In-house garden. Right? What do you mean by garden? You all love to play in the garden? Yes. What is there in the garden? Yes, beautiful trees, beautiful flowers, there is a swing. You like to swing, right? Swing yani chula. There is a chula also in the garden, right? So, the chapter is in-house garden. In-house garden. Now the meaning is coming from here only. That means a garden in your house, right? Everybody has a small garden in their house, yes? So, this is a new chapter which we are going to study about in-house garden, right? But what happens usually, in big cities, there is no enough place and the people, they live in buildings because it is very congested. Their places, the space over there is very less, so that is why they stay in buildings. And when they stay in buildings, they do not have enough space for a garden in front of their house. But then, is it that they don't have a garden in their house? No. Yes, they have a small garden. They plant trees in, yes, what is this? Gamla? Right. So, they plant trees in small pots. Okay. So, this is how they have garden, and in this chapter, Pari, everyone visits their grandmother's house in vacations, right? So, in their vacations, Pari also visits her grandmother's house. Her grandmother's house is very spacious, and because it is very spacious, the grandmother, she grows all the vegetables in her own garden, right? And after growing all the vegetables, she plucks the fresh vegetables and she cooks them because she grows them in her garden and they have a lot of nutritious value in them. वो बहुत fresh होते हैं, वो बासे नहीं होते हैं, वो chemicals के नहीं बनते हैं, नहीं तो बाजार में तो क्या chemicals का खाद देते हैं और जल्दी से grow कर लेते हैं vegetables को, आजकल जैसा कि चल रहा है. So in the same way, what happens, Pari visits her nanny's house and there she comes to know what a garden is, how we grow plants, which plants have nutritious value, which plants do not have nutritious value, right? So, let's read the chapter and let's find out how she visits her grandmother's house, what all her grandmother does to grow good plants, and what are the food and vegetables which have nutritious value which a grandmother grows in her garden, right? So everybody be ready with your reader book, right? We are doing from our reader book and page number 28. Which page? Page number 28, and on this page we are going to start a new chapter, that is in-house garden, right? Let's start. Are you all ready? Yes? Come on. Did you know that you can grow not just flowers but also vegetables in your garden? It is not that in your garden you can only grow flowers. No, we can grow vegetables also. Read this story and learn about the wonders of rooftop gardening from Pari's grandma. Rooftop gardening. Rooftop gardening means the garden which is on the terrace. छत पे जो garden बनाते हैं, that is known as a rooftop garden, right? Sneaking. Sneaking माने चुपचाप झांकना, right? So, sneaking in silently, चुपचाप kitchen में entry करती है into the kitchen from the door in the veranda, jumping over the small plants. Bow! Shouted Pari to scare grandma. Now see, Pari, she's coming in quietly and
what she is doing, she is frightening her grandma. Grandma को डरा रही है भौंक करके. तुम लोग को भी मजा आती है ना? You all enjoy. किसी को डराना हो तो कैसे करते हैं? दरवाजे के पीछे छुप जाते हो और भौंक करके चिल्लाते हो, right? So in that same way, she is hiding. She is coming into the kitchen silently from the door in the veranda. Shouted Pari to scare grandma. It was 8 a.m. Now what is the time? The time is 8 a.m. in the morning. Pari had woken up to the delicious smell in the kitchen. और परी की नींद, परी हैड वोकन अप, मतलब परी की नींद जो खुशबू आ रही थी किचन में से, उस खुशबू की वजह से, डिलीशियस खुशबू आ रही थी, उसकी वजह से उसकी नींद खुल गई. ग्रैंडमा's हाउस was always a special place to go. Yes, you enjoy in your grandma's house. No one is there to tell you anything. And even if you do some mistake, grandma is there to protect you, right? So she always takes your side and she scolds your mama. Rehne do, leave him. Now he will not do it, right? So your grandma always protects you, and that is why she also enjoyed going to her grandma's house. Because of the good food to eat. Yes, when you go to your grandma's house, grandma cooks your lovely delicious food for you. Whatever you like, grandma cooks for you, right? And the big house in the outskirts to run around. Outskirts, what do you mean by outskirts? Outskirts means outer part of a town or a city. जो शहर से बाहर होता है वहाँ पे बहुत सारी ज़मीन होती है. There is a lot of space, right? And the children enjoy over there because even their house was outside the city. She hugged her grandma and wished her good morning. Hugged? What do you mean by hug? आप लोग अपने मम्मी पापा को हक करते हो? ऐसे जाके जोर से मम्मी को बाहों में ले लेते हो, पापा को हक कर लेते हो, गले में हाथ डाल के झूल जाते हो. So that is known as hug. So Pari also, she hugged her grandma and wished her good morning. Now see, we must greet, no? In the morning when you get up, you say good morning to your parents. Yes? Jai Shri Krishna, good morning. Jai Jinen. All these are the things you greet when you, at the moment you get up, you must greet your elders. पैर पड़ना चाहिए, some touch the feet of their elders, right? So in the same way, Pari also says good morning. Why are there new tomatoes and chili plants in the veranda? Now she is asking her grandma, why are there new tomatoes and chili plants in the garden, in the veranda? Pari asked curiously. Curiously मतलब आश्चर्यचकित होके पूछती है कि मम्मा ये न्यू प्लांट्स क्यों है वरांडा में. Pari wondered why grandma wouldn't buy vegetables from the market and instead would grow her own. Now she wondered, वो सोच में पड़ गई. She started thinking. Wonder means to think. So she started thinking that why doesn't grandma buy the fruits from the market, the vegetables from the market? Why she has to do so much hard work and grow them in her own garden? I have difficulty in getting fresh food. The vegetables I buy from the market nowadays have either the smell of chemicals or are stale. So now grandma is telling, I have a difficulty in buying fresh foods. I don't get fresh foods the way the fruits, the type I want them. I always, when you smell the fruit, you get the smell of the chemical or they are stale. Stale यानी बासी, not fresh, right? So the opposite of fresh is stale. And she says that the vegetables which she buys from the market are stale. Said grandma disappointedly. Disappointedly, उदास होकर, चिढ़कर, गुस्से में, अरे यार क्या है, बाजार में तो fresh vegetables मिलते ही नहीं हैं. So I decided to start my own rooftop garden, she added. फिर इसीलिए ग्रैंडमा ने बोला कि इसीलिए मैंने खुद ने डिसाइड किया कि I will start my own rooftop garden. Now grandma took Pari to the terrace and showed her the other vegetables she was growing. Now grandma, what did she do? She took Pari upstairs and there she showed her all the other vegetables which she was growing. Excited. Pari बहुत excited हो गई, happy हो गई देखकर. Wow, कितना सुंदर garden है. Pari began plucking lady's finger. Lady's finger, भिंडी. परी भिंडी तोड़ने लगी. बिटर गॉड. Now what do you mean by bitter gourd?
bitter यानी कड़वा, gourd करेला, so bitter gourd means करेला, right? Carrots, गाजर, and leafy vegetables पत्तेदार सब्जियां. So they also plucked chilies and tomatoes in the veranda. In the veranda she also plucked chilies and tomatoes. Plucked यानी तोड़े. She plucked chilies and tomatoes in the veranda. Right? Pari had never seen carrot plants. Pari had never seen a carrot plant and was fascinated to see carrots are root vegetables and grow under the ground. Now when she had never seen, she never knew that carrots grow under the ground. Carrots are root vegetables. She never knew this. Now there are different type of vegetables, right? Some grow on the plant, some grow under the ground, some grow on climbers. So she was very fascinated. बहुत खुशी हो रही थी, बड़ा आश्चर्य हो रहा था. क्या बात है, जमीन के अंदर भी वेजिटेबल्स होते हैं. Now bitter gourd were climbers. See, just now I said no, some grow on climbers. Climbers means they are weak plants and they take the support of the wall or another plant to grow. And bitter gourd is a climber. Yes, bitter gourd were climbers which made the wall look so green and beautiful. Now see, bitter gourd was taking the support of the wall and growing, and that made the wall very beautiful, green and beautiful. On getting back to the house, Pari hurriedly ran to wash the vegetables. Now when she got back to her house, she ran to wash the vegetables and put them in her mouth. She wanted to taste them. Oh, they are all from my garden and I want to taste. What is the taste of the plants that are grown in our garden? उन garden में से जो plants है उसकी taste कैसे आता है? Ew, Pari screamed, chewing a raw bitter gourd. अब एक कड़वा करेला ले लिया और उसको चबा लिया तो पूरा मुंह कड़वा हो गया और वो चिल्लाई ew and made sour face. अब बड़े अजीब से मुंह बनाने लगी. जब कोई खट्टी चीज, कड़वी चीज खा ले तो आप लोग भी तो गंदे मुंह बनाते हो ना, राइट? सो वो भी ऐसे गंदा मुंह बनाने लग गई, कड़वा सा मुंह बनाने लग गई. क्या खा लिया मैंने? फिर ग्रैंडमा ने एक्सप्लेन किया. ग्रैंडमा हैड अ गुड लाफ. ग्रैंडमा जोर से हंसने लगी और फिर परी को समझाया कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको कुक करना ज़रूरी होता है, जो कुक करने पर ही टेस्टी लगते हैं. विच टेस्ट गुड व्हेन दे आर कुक्ड, right? Yum! The food is so good and tasty, exclaimed Pari during lunch. Now during lunch she was enjoying the tasty food, you know, the plants from the garden. When they pluck the fresh vegetables, when you cook them, they taste very yummy. And she also was very happy to eat the fresh tasty food. Now in this page there are some words given in this bracket. Let's see them. Outskirts. I told you outskirts. What do you mean by outskirts? Outer part of a town or a city. Chemicals. Medicine used to protect plants. Root vegetables. Vegetables such as carrot whose roots are eaten. Right. Now we move on to the next page over here. Right from the starting we are reading. Okay. Of course it is, and it's not only fresh and tasty but also nutritious and healthy. Yes, the vegetables, the fruits are not only fresh and tasty but they are also nutritious and healthy because they are natural and contain traditional spices which help in digestion. स्पाइसेस जैसे मिर्ची हमारी स्पाइसेस में आती है, मसाले में आती है ना? तो जब हम मिर्ची तोड़कर फ्रेश मिर्ची डालते हैं वेजिटेबल के अंदर तो उसका टेस्ट अलग ही आता है और वो हमको डाइजेशन में भी हेल्प करती है. improves our immunity. Now this immunity word you might have heard every day. Eat lot of fruits and vegetables, drink milk, do not go outside, increase your immunity power. Immunity power मतलब सहन शक्ति, right?
हमको कोरोना वायरस से बचने के लिए, हम इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मम्मी आपको रोज़ दूध पिला रही है, सब्जियां दे रही है, दवाइयाँ भी दे रही है, कुछ की मम्मियाँ तो काढ़े भी दे रही है अपने बच्चों को कि थोड़ा सा काढ़ा पी लो, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। जब हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है, व्हेन वी हैव द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, वी डू नॉट फॉल सिक। And to have a strong immunity, you must eat all the vegetables. सारे वेजिटेबल्स आपको खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपको वेजिटेबल्स खाना, right? Which will make you stronger. Explain grandma. Explain समझाया, ग्रैंडमा ने समझाया कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपको कैसे वेजिटेबल्स खाना चाहिए? फ्रेश वेजिटेबल्स खाना चाहिए। What does nutritious mean? What is the meaning of nutritious? Asked Pari, looking intently but confused. देख रही थी ग्रैंडमा की तरफ, न्यूट्रिशियस का मतलब क्या होता है ग्रैंडमा? कंफ्यूज्ड है परी, क्या क्या बता रही है ग्रैंडमा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। Now, grandma is explaining. Carrots and leafy veggies you like are good for your eyes. Now see, your eyes also need some extra food, some extra vitamins. So what you have to eat for your eyes? Carrots and leafy vegetables, palak, मेथी, इन सब की सब्जियां भाजियां खाना बहुत ज़रूरी है। You must eat them. I think some children don't like to eat methi bhaji and palak, right? But for your eyes, for the health of your eyes, you must eat them. And the bitter gourd, और करेला, या कड़वा होता है, मम्मा मुझे करेले की सब्जी ना देना, लेकिन करेला जो होता है that improves the digestion. They are good for your health. They are very good for your health. So it is very important to learn about and eat fresh and healthy vegetables regularly. Now what happens children, you don't think about what you are eating. मेरे को तो जो अच्छा लगता है वो मैं खाऊंगा, जो अच्छा लगता है वो नहीं खाऊंगा, right? But you know, you don't have to go with the taste. You have to first think, what are you eating? Is it healthy for you? What are the nutritious values in there? उसमें क्या क्या गुण हैं, वो हमारी कैसे मदद करेंगे, हाउ दे विल हेल्प अस। लाइक दिस यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट इट, डू द रिसर्च एंड देन यू मस्ट ईट। लाइक बिटर गॉर्ड हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो हमारे पेट को साफ करता है, क्लीन करता है, हमारे ब्लड में से शुगर लेवल को कम करता है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है वो लोग कड़वा करेले का जूस भी पीते हैं। वाई डू दे ड्रिंक द जूस ऑफ दैट? To control their sugar level. So it is very healthy food for you, right? और नहीं, हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, पर हम थोड़ा थोड़ा खाने लगेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी सारी चीज़ें खाने के लिए। कुछ बच्चे तो वेजिटेबल्स खाते ही नहीं हैं, मम्मियाँ बड़ी परेशान होती हैं, मम्मियाँ बोलती हैं हमारा बच्चा तो वेजिटेबल्स खाता ही नहीं है, बस आलू की सब्जी खाता है, भिंडी की सब्जी खाता है, राइट? आलू इज़ ऑल्सो गुड, भिंडी इज़ ऑल्सो गुड, बट you have to eat other vegetables also. Then what you find is you are not growing well. Some children are tall in your class and some are very small. Why they are small? Because they are not eating vegetables, they are not taking proper diet. That is why they are small in height. And all those who are grown up, they have taking proper diet. That is why their height is growing, their health is growing, they are strong. Some cannot run also. So all these are the things why we must eat nutritious food and nutritious vegetables. So it is very important to learn about and eat fresh and healthy food regularly, explained grandma. I love good food, not just because of the taste, but also because it is nutritious. Pari said like she was an expert now. अब परी बोलती है जैसे वो बहुत बड़ी एक्सपर्ट बन गई है, जानकार बन गई है। एक्सपर्ट यानी जानकार, इतनी बड़ी जानकार बन गई है कि वो तो सारी चीज़ें खाती है और उसे ये पता है क्यों खाना चाहिए और इसलिए वो खाती है। दैट इज़ वाई आई लव फूड, नॉट बस जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट, बट
Also because it is nutritious. Pari said, like she was an expert now. After lunch, Grandma asked Pari to bring leftovers and vegetable peels to put in a compost pit. Now, after the food was over, after everything was over, then comes the clearing part. After your eating of the food, Mama does the cleaning of the kitchen, no? So, in the same way, Grandma told Pari to bring all the peels and the leftover vegetables to put in the compost pit. Now, what is a compost pit? You might be thinking, ये compost pit क्या है? चलिए हम देखते हैं. Let's see the word meanings given over here. Here the word meanings are given. Traditional, being used for a very long time. जो हमारी दादी और दादी के घर में होता था, that is known as traditional. जो चला आ रहा है, जो हमारी दादी ने किया वो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे करेंगे. That is known as traditional. Immunity, the power to protect against diseases. Intently, with close and sincere attention, ध्यान से. A compost pit, an area in the ground, an area. What is it? An area in the ground. ये जमीन के अंदर एक एरिया बन गया है, right? In the ground where, now what are you going to do? Where all the rotten leaves, जो पत्तियों का कचरा है, जो वेजिटेबल्स के छिलकों का कचरा है, जो बची हुई सब्जी होती है हमारे घर में, जो कुछ भी होता है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं. दिस इज अ कंपोस्ट पिट. और इसके अंदर वो क्या बन जाता है? वापस से मिट्टी बन जाती है, खाद बन जाता है, और हम यही खाद हमारे गार्डन में पेड़ों को देते हैं. दिस इज नेचुरल. ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर कोई केमिकल का यूज नहीं होता है. एंड दैट इज व्हाई द वेजिटेबल्स फ्रॉम आवर ओन गार्डन, दे हैव अ गुड टेस्ट, राइट? Are mixed to improve the soil quality. This will become again soil, and this taken from here and is put in all the pots where the plants are growing, right? Now, Grandma explained how there is so much of the waste that is everywhere and becoming a problem. Now see, there is a lot of waste. Waste मतलब कचरा. चारों ओर कचरा ही कचरा दिखाई देता है और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने लगा है. Yes, we have to close the windows of the car when passing by the area near the dump yard because of its stink. Now see, हाँ सही बात है. जब हम कार से ट्रैवल करते हैं और कहीं डंप यार्ड आता है, डंप यार्ड यानी जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, वहाँ पर जो स्मेल आती है, द डर्टी स्मेल इज नोन एज स्टिंकिंग, राइट? नाउ द टॉयलेट्स इन योर हाउस और योर स्कूल, what happens when you don't put water over there? They start stinking. बदबू मारने लगते हैं, और जो चीज़ बदबू मारती है उसको हम लोग बोलते हैं stinking, right? So you have to close the window because of the dirty smell coming in, right? Yes, said Pari. Grandma explained how most of the waste can be recycled and reused. Recycled, now see here, the waste, the leaves, the peels, छिलके, वेजिटेबल्स के पत्तियाँ, और जो बची हुई सब्जियाँ वगैरह जो भी कुछ होता है वो सारा हमने ये पॉट में डाल दिया है, यहाँ पे वापस मिट्टी बन गई है. सो दिस इज नोन एज अ रिसाइकल. ये जो है कचरा वापस से हमारा रिसाइकल हो चुका है, ये खाद बन चुका जो हम वापस प्लांट्स में डाल रहे हैं. लेकिन क्या हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रिसाइकिल plastic. There are some things which can be recycled, and this is how Grandma recycles the peels of the fruits and vegetables, the leftover vegetables, in a compost pit. Grandma explained how most of the waste can be recycled and reused. She told her how leftover cooked food, uncooked raw vegetables, waste and dry leaves can be easily composted. She explained her कि जैसे बचा हुआ
जो वेजिटेबल्स होते हैं, जिनके छिलके होते हैं, मेथी भाजी आपने देखा होगा मम्मी सुधारती है, बहुत सारा कचरा होता है। मटर मम्मी सुधारती है, बहुत सारा कचरा होता है। भुट्टे भुट्टे के ऊपर के कवर होते हैं, राइट। तो ये सारा कचरा बहुत सारा होता है, ये सब जाके एक डंप में डंप कर देते हैं। अब डंप करने के लिए या तो आप ज़मीन के अंदर एक गड्ढा कर लो, एक बड़ा सारा गड्ढा कर लो, या फिर एक मटका अपनी छत पे रख लो, उस मटके के अंदर सारा कचरा रोज ले जाके डालो, और वो क्या बन जाएगा, अच्छा खासा खाद बन जाएगा, राइट। And with a roof garden at her disposal, she gets all the compost she needs for the garden. अब रूफटॉप गार्डन होने की वजह से उसको सारी चीज़ें घर पे ही मिल जाती है, पत्तियों का कचरा भी मिल जाता है, वेजिटेबल्स का भी कचरा मिल जाता है, बचे हुए वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर डाल देते हैं कंपोस्ट पिट में, और बढ़िया सा मैन्योर तैयार हो जाता है, जो पेड़ के लिए बहुत न्यूट्रिशियस होता है, और जो हमको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस। But won't it smell bad to have a compost pit at a backyard? अब क्या उसमें से बदबू नहीं आएगी मम्मा? अगर हमने घर के पीछे एक कंपोस्ट पिट बना दिया, सारा कचरा उसमें डाल रहे हैं पत्तियों का, तो क्या उसमें से बदबू नहीं आएगी? आस्ट परी के मन में जिज्ञासा पैदा हुई, उनका एक क्वेश्चन पैदा हुआ, क्यों मम्मा ग्रैंडमा ये बदबू नहीं मारेंगे? Grandma explained that turning the compost pit pile regularly will keep off the bad smell. अब बदबू से बचाने के लिए उस कंपोस्ट पिट को किसी लकड़ी के सहारे उसको रोज हिला देना पड़ता, उसको ऊपर नीचे कर दोगे तो उसमें से कभी बदबू नहीं आएगी, वो सड़ेगा नहीं वहाँ पे चीज़ें, राइट। क्यों? क्योंकि उसको एयर मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। जब एयर और ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो मिलके क्या बनने लगेंगे, मैन्योर बनने लगेंगे, और उसमें से बदबू नहीं आएगी। दे विल नॉट स्टिंक बैड, दे विल नॉट स्मेल बैड। आई वॉन्ट टू ग्रो माई फूड नाउ। अब मैं भी अपना गार्डन ग्रो करना चाहती हूँ, अब मैं भी अपना फूड खुद ग्रो करूँगी। बट हाउ विल आई इन द स्मॉल अपार्टमेंट वी लिव? अपार्टमेंट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अपार्टमेंट? अपार्टमेंट मीन्स एक जो ये बड़ी सारी बिल्डिंग होती है, ये बिल्डिंगों में छोटे छोटे घर होते हैं, these are known as apartments. Why? Because in big cities there is no enough space, so they have these apartments, they have to live in apartments, right? So now how will I grow in my apartment? My apartment is so small, grandma. So grandma says it is very easy, it will not take much time, it is very easy. I will help you have a small kitchen garden and a compost pit. I am there, I will help you to have a small kitchen garden and a compost pit. When I am at your house for your birthday, promised grandma. Now here what grandma is promising is that when I'll come for your birthday, that time I will come and I will guide you, I will help you to have a small kitchen garden at your apartment also. Yes, you have a balcony, in the balcony you can grow, but you need to know about it, how to grow, what are the things required to grow, how to make a compost pit, where you can make a compost pit, right? Now, which plants do I want in my kitchen garden? She started thinking. Now she started dreaming, she started planning. Acha, when grandma will come on my birthday, I should have my plan ready. What are the plants which I am going to grow in my garden, right? Grandma had managed to plant another seed successfully. Now what did grandma do? Grandma had planted a seed. एक बीज बो दिया था। बीज बोना मतलब plant a seed. अब जरूरी नहीं है कि पेड़ का ही सीड हो, नहीं, विचारों की भी सीड्स होते हैं। एक छोटा सा सीड परी के माइंड में डाल दिया। अब परी इस सीड के बारे में सोचने लगी, ये सोचने लगी कि मैं एक अपना किचन गार्डन कैसे बनाऊंगी, ग्रैंडमा आएगी जब मैं कौन कौन से पेड़ लगाऊंगी, और मुझे उनकी देखभाल कैसे करनी है, मुझे कंपोस्ट पिट कैसे बनाना है। मैं भी अब बाज़ार से केमिकल वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाऊंगी, मैं भी अपना फूड अपने घर में उगाऊंगी और फ्रेश वेजिटेबल्स खाऊंगी, राइट। सो इन दिस वे शी हैड प्लांटेड अ सीड इन परीज माइंड, right?
successfully, but this time in Pari's curious mind. परी का जो बिल्कुल क्यूरियस माइंड था, जो जानने की इच्छा रखता था, नई नई चीज़ें जानना चाहता था, क्या क्या कर सकते हैं हम, वो ग्रैंडमा ने परी के दिमाग में डाल दिया। और अगर हम लोग भी अपने अपने गार्डन्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा सकते हैं और अपने घर के फ्रेश वेजिटेबल्स खाएंगे तो हम लोग हेल्दी भी रहेंगे और हमें परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। हमारे पास पूरे टाइम और थ्रू आउट द ईयर हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल रहेंगे, राइट? So this is all about the chapter. The chapter's name is In-House Garden, and in this chapter Pari is a small girl and she visits her grandma's house and she enjoys in her grandma's house the tasty vegetables which grandma cooks for her. And one day what happens, she suddenly sees that grandma has planted some tomatoes and leafy vegetables in the veranda, and she goes and asks, why don't you purchase them from the market? Then the grandma says, because I don't like the smell of the chemicals in the food. That is why I have my own garden and I grow the food in my own garden. Then she took Pari upstairs on the terrace. Terrace मतलब छत, roof. वहाँ पर ले जाकर वहाँ पे दिखाया जो प्लांट्स उन्होंने लगाए थे। वहाँ पर काय के प्लांट्स लगे थे? यस, बिटर गॉर्ड था, कैरेट्स थे, लीफी वेजिटेबल्स थी। और जब परी को ये मालूम पड़ा कि कैरेट्स ज़मीन के नीचे होते हैं, सो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड and she was happy also. She was so excited to know all the things. Then grandma told her about how the compost pit is being made to prepare manure at home itself, right? घर पे ही मैन्योर खाद बनाने के लिए एक कंपोस्ट पिट कैसे बनाया जाता है, और हमारे घर का जो कचरा निकलता है, जो पील्स निकलते हैं, जो छिलके निकलते हैं, वो सब हम अपनी कंपोस्ट पिट में डालेंगे और इससे फ्रेश मैन्योर प्रिपेयर होगा। लेकिन फिर इसमें से स्मेल क्यों नहीं आती है? वाई डजंट स्टिंग? बिकॉज यू हैव टू कीप टर्निंग इट अगेन एंड अगेन। टर्निंग मतलब उसको ऊपर नीचे करना, राइट? एक स्टिक से, लकड़ी के सहारे उसको ऊपर नीचे कर देंगे तो उसमें से गंदी स्मेल नहीं आएगी, एंड इट विल बिकम अ गुड मैन्योर। एंड thus she plants a seed in the Pari's mind of planting trees. Yes, nowadays people have stopped planting. They only know how to cut the trees to construct big houses. But grandma had planted a seed to plant trees in the mind of Pari, and hope it is planted in your mind also. And during this lockdown period, hope you will also try to plant some plants which are very easy. You can plant a chili plant, you can plant a tomato plant. It doesn't take much space. एक गमले में भी उगाते हैं, एक लेडीज फिंगर का प्लांट भी आप लगा सकते हो, and you can enjoy the fresh vegetables at home, right? So here we come to the end of this chapter, which we will continue in the next period once again. Okay children, bye bye.